हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, के बजै छी? उपेंद्र कुमार यादव। उपेंद्र कुमार यादव। ई उपेंद्र कुमार यादव जी छथि। अखन तक में सबसे बेसी प्रश्न के उत्तर देने छथिन। 530 प्रश्न के उत्तर से बेसी 530 प्रश्न से बेसी प्रश्न सबके उत्तर दऽ चुकल छथिन। और हिनकर मोबाइल नंबर भेलनि 98। मोबाइल हेलो। नंबर 98 076 43 976। 976। ई एकटा थाई टीचर छथिन। सोनुखरा SONUKHARA सोनुखरा में। और हिनकर घर भऽ गेलनि रघुनाथपुर, सोनमा 3 महोत्तरी। अहाँ जे इन्फॉर्मेशन रही लऽ गेल तऽ कोनो पत्रिको सबमे देलिए? जी पत्रिका में दिलिए, लेकिन पत्रिका वाला के कनी अथी व्यस्तता भऽ गेलै तऽ हम फेर के कई बेरी उनका रिचार्ज कैलिए जे तऽ कहलन जे कथी कहै छी जे सर हम प्रिंट करे वाला न हले, बाहर चलि गेल रहले ठीक तऽ छै, तै से तऽ हम छियै प्रयास में। हेतै। आब सर केना कॉलर छियै? अहाँ दोसर कॉलर छियै। जी धन्यवाद। हाँ, आब अहाँके प्रश्न हम एकटा पूछि रहल छी, पद मिलान के प्रश्न उपेंद्र जी के। ड्यू, DUE ड्यू। ड्यू। इफ, अराइवल, द, बी, BEB, BEB। बस। बस। हाँ, BUS बस। बस। नॉट, कंपनी, कंपनी। लेट, टू, TOO। TO2, LATE, लेट टू। पैसेंजर्स, रिस्पॉन्सिबल, सिवल, द, विल। हाँ, द तकर बाद विल, तकर बाद मिस, MISS मिस। कहू तऽ। ड्यू, इफ, अराइवल, द, बी, बस, नॉट, कंपनी, लेट, टू, पैसेंजर्स, रिस्पॉन्सिबल, द बस, द रिस्पॉन्सिबल के बाद द, विल, मिस। हाँ हाँ, पद मिलाओ तो। पैसेंजर, कहू। द पैसेंजर विल बी। ना, पैसेंजर नहीं हेतै शुरू में। द कंपनी, हाँ ठीक। the company will not be हाँ responsible. हाँ The company will not be responsible हाँ if हाँ the passenger हाँ if the passengers will miss the bus due to arrival. विल कैटा कहलिए?
विल एकेटा छै ने जी आ लेट कतऽ छोड़लिए ड्यू टू लेट अराइवल हाँ। लास्ट में कहू तो फेरो शुरू से कहू द कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द पैसेंजर will if the passenger will come will not the company will not be responsible हाँ if the passenger will arrive late will arrive late and miss will arrive no due to late arrival जिग जैग भ गेल एतऽ द दुइये बेर यूज करऽ के छै विल एके बेर यूज करऽ के छै तो will sir the company will not be responsible the company will not be responsible if the passenger arrival due to late आ मिस कतऽ गेलै MISS मिस if the passenger miss the arrival will miss due to late arrival विल दू बेर कहलिए सर एक बेर मात्र कहलिए कहू ना तो फिर शुरू से the bus company will not be responsible if the passenger due to late arrival if passenger due to late arrival बस कंपनी नहीं हेती शुरू में सोझे कंपनी हेते द कंपनी the company will not be responsible हाँ if हाँ the passenger miss the bus due to late arrival अखनो द बेसी कह दिलिए लिए सुनू द कंपनी the company देखो will not द दुइये ठा द दू बेर यूज करे के छै विल एक बेर यूज करे के छै the दू बेर विल एक बेर बस एक बेर the company will not responsible if the passengers miss the bus due to late arrival अहो बेर 3 बेर कह दिलिए 0.2 भेटल अहाँके सुनू ई टिकट पर रहे छै लिखल द कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल if passengers miss the bus due to late arrival दोसर प्रश्न आब अहाँके ई प्रश्न अहाँके मनन क के सुनऽ पड़त ई प्रश्न मनन क के सुनऽ पड़त कथी प्रश्न भ गेल अहाँके ई प्रश्न मन क के केना सुनऽ पड़त त उपेंद्र जी हम अहाँके पहिने प्रश्न कहि दै छी जी मैले वाचन गर्ने कवितामा कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ जी कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ अनि अर्को
अंग्रेजी डेलीको मैले वाचन गर्ने कवितामा डेली अंग्रेजी शब्दको नेपाली कुन शब्द दिएको छ? डेली अंग्रेजी शब्द को त्यसपछि पेनको PAIN पेनको, त्यसपछि इनमीको ENEMY इनमी, को त्यसपछि केज CAGE केजको, PAG तेज, त्यसपछि फेट FATE फेट, FAT फेट, त्यसपछि डेड बडी, डेड बॉडी, त्यसपछि अ सिंगल मोमेंट, अ सिंगल मोमेंट, त्यसपछि स्ट्रेंज, सिंगल मोमेंट अनि त्यसपछि स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, त्यसपछि एभ्रीवेयर, एभ्रीवेयर, त्यसपछि मैड लव, MAD मैड, मेड, MAD मैड, मैड, त्यसपछि टेंडर चाइल्ड, टेंडर चाइल्ड, त्यसपछि फ्रेंड्स, टेंडर चाइल्ड, त्यसपछि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स FRIENDS, फ्रेंड्स हो FRIENDS, त्यसपछि वुड्स, वुड्स WOODS, त्यसपछि लीप LEAP, LET, LEAP, LEAT, P मात्र LEAP, LEAT, लिप, लीप ल अब धेरै भयो LEAP, त्यसपछि फ्ली FLEE, फ्ली, ल बालक बबुरो दिज सुक नामा, हुम परेको छु पिजडामा, मकन हडे शिव शान्ति र चैन, सपना बिच पनि रतिभर छैन, मेरा बान्धव बाबु र आमा, बस्छन् बनका एक कुनामा, कोसित पोखु मनको ताप, गर्दै पिजडा बाट बिलाप, आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्य म हुन्छु, कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल बनका सुख सम्झन्छु, फलफूल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई, विधिले पायो पिजडा भित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र, वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा, के गरौँ कसरी उम्की जाऊँ, कोसित मनको दर्द बिसाऊँ। ल फेरि बालक बबुरो दिज सुक नाम, हुम परेको छु पिजडामा, मकन हरे शिव शान्ति र चैन, सपना बिच पनि रतिभर छैन, मेरा बान्धव बाबु र आमा, बस्छन् बनका एक कुनामा, कोसित पोखु मनको ताप, गर्दै पिजडा बाट बिलाप, आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्य म हुन्छु, कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल बनका सुख सम्झन्छु, फलफूल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई, विधिले पायो पिजडा भित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र, वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा, के गरौँ कसरी उम्की जाऊँ, कोसित मनको दर्द बिसाऊँ। ल यसमा कुन भगवानको नाम उल्लेख गरिएको छ? शिव, शिव, शिवको नाम उल्लेख गरिएको छ। यो भयो पास। शिव कति पटक? 2 पटक। शिवको नाम 2 पटक
उल्लेख गरिएको छ। ल अब अर्को डेली डेली दिनहु DAILY डेली दिनहु दिनहु छ र कतै नित्य डेली नित्य यो भयो मिस्टेक। अर्को पेन PAIN पेन विलाप विलाप कहाँ छ यसमा छ सर विलाप विलाप हाँ विलाप विलाप हो विलाप होइन यहाँ पेनको अर्थ विलाप होइन विलाप छ तर विलाप होइन दर्द दर्द पेनको अर्थ दर्द हो यहाँ। अर्को इनमी नेमीको बैरी बैरी यो सही छ। त्यसपछि केज के पिजडा पिजडा यो पनि सही छ। त्यसपछि फेट FAT भाग्य भाग्य कहाँ छ यो कवितामा विधि विधि। त्यसपछि डेड बडी मुर्दा ल ठिक छ। त्यसपछि अ सिंगल मोमेन्ट छोटो क्षण थियो रतिभर अ सिंगल मोमेन्ट रतिभर। स्ट्रेंज आगन्तुक कहाँ छ आगन्तुक यहाँ विचित्र एभ्रीवेयर कतैतिर कहाँ कतैतिर छ वरिपरि वरिपरि। त्यसपछि म्याड पागल पागल। त्यसपछि टेन्डर चाइल्ड निर्दोष बालक कहाँ निर्दोष बालक छ यसमा बालक बबुरो बालक बबुरो। त्यसपछि फ्रेन्ड्स बान्धव बान्धव। त्यसपछि वुड्स वन वन। त्यसपछि लीप LEAP लीप उफ्रन उफ्रन छ ठिक छ उफ्रन छु। त्यसपछि फ्ली FLEE फ्ली फ्ली पनि उफ्रनु जस्तो जस्ट उम्की जाऊं उम्की जाऊं के गरु कसरी उम्की जाऊं के गरु कसरी उम्की जाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 बराबर बराबर भयो त। ल अर्को प्रश्न सबै बराबर भइहाल्यो सर हो ल केही आएन यसमा। अर्को प्रश्न यो यो कविताको शीर्षक के हो मलाई कोही पनि होइन। यो कविताको शीर्षक साइड क्वेश्चन पिजडाको सुगा पिजडाको सुगा ल यो यसको रचयिता को हो साइड क्वेश्चन यसको मिलेन। यसको रचयिता लेखनाथ पौडेल। ल अर्को प्रश्न यो कविता एलिगेरिकली
बनाइएको छ भन्नाले यो सुगालाई चित्रण गरिए पनि यो सामाजिक राजनीतिक कुरालाई इङ्गित गर्न खोजिएको छ त्यति बेलाको नेपालको। कसको विरुद्धमा यो कविता लेखिएको हो? राणाको विरुद्धमा। ल 0.1 राणाको विरुद्धमा यो कविता लेखिएको हो। ल अर्को प्रश्न अब उपेन्द्रजीको अर्को प्रश्न आयो यसमा। उपेन्द्रजीको अर्को प्रश्न ल 212 पेजको ई नंबर उपेन्द्र जी। 212 पेजको ई नंबर उपेन्द्र जी। ल विकल्प अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, पोर्चुगल, बेल्जियम। ल भन्नुस् त। अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम। पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम। हजुर, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम। ठुलो आर्थिक ठगीको आरोपमा फरार भएका भारतको हीरा व्यापारी मेहल चोक्सीलाई विकल्प मध्ये कुन देशमा 2025 अप्रिल 13 अर्थात् 2081 चैत्र 31 गतेतिर पक्राउ गरिएको थियो? उलाई भारत सरकारलाई प्रत्यर्पण गर्न भारत सरकारले अनुरोध गरेको छ। मेहुल चोक्सीलाई कुन देशमा पक्राउ गरिएको थियो? ल यसको ल मेहुल चोक्सीलाई कुन देशमा पक्राउ गरिएको थियो? ल भनौ। पास भइसकेको छ। हो, ठीक छ। बेल्जियम। ल सही आंसर हो। 0.1 0.1। अर्को प्रश्न अब 213 पेजको ए नंबर 213 पेजको ए नंबर उपेन्द्र जी। ल विकल्प 98 149 227 409 753। फिर कहू त 98 149 227 409 753। सूर्यबाट पृथ्वी कति मिलियन किलोमिटर टाढा पर्दछ? ल यो भयो पास। अब भनौ। ल भन्नुस्। 409 149। ल यो पास भएर भन्नुभयो, फरक पर्दैन। ल 149। ल अर्को प्रश्न
सूर्यबाट बृहस्पति ग्रह कति टाढा पर्दछ? 409 यो 409 409 0.4 ल अर्को मंगल ग्रह कति टाढा पर्दछ सूर्यबाट? 227 ल 0.1 ल अर्को प्रश्न उपेन्द्र जी 213 पेजको ए नंबर, अब 213 पेजको बी नंबर उपेन्द्र जी। ल हिन्ट छैन, फिल्मको नाम भन्नु पर्दछ। संसारमा 2025 अप्रिल 10 तारिखमा एकैसाथ संसारभरि प्रदर्शन भएको त्यो हिन्दी चलचित्रको नाम भन्नुहोस् जसमा सन्नी देओल। हेलो जी नमस्कार। के बजै छी?